Hello dear students, welcome to my class. This is Dr. Varsha and today we will study cell division in which we will focus on mitosis, different stages and significance of mitosis. Actually, mitosis plays very important role in growth and development of the plants. So, let's start. Cell division is a process of cell replication or cell multiplication in which a pre-existing cell enlarges in size and undergoes division to form daughter cells. It is of three types: amitosis, mitosis, and meiosis. So first we will study about the historical background of cell division. And mitosis in plant cells was first time described by Edward Adolf Stossberger in the year 1875. And mitosis in animal cells was described by Fleming in the year 1879, whereas the term mitosis was coined by Fleming in the year 1882. And reduction division, it is also called meiosis. So meiosis was demonstrated by Edward von Benden in the year 1887, and the term meiosis was coined by Farmer and Moore in the year 1905. And the cell cycle, which we have already studied in my previous lecture, and the concept of cell cycle was given by Howard and Pelk in the year 1952. So this is the historical background of cell division. Now we will focus on mitosis. Mitosis, it is also called somatic division or equational division. It is a controlled process in which chromosomes replicate and become equally distributed both quantitatively and qualitatively into two daughter nuclei, so that the daughter cells come to have the same number and type of chromosomes as were present in the parent cell. And it is also found in somatic cells, so it is also called somatic cell division. And in two daughter cells, the amount of genetic material is equal in equal proportion, so it is also called equational division. So mitosis is further divided into two types: karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis is the division of nucleus, and cytokinesis is the division of cytoplasm. And karyokinesis is further divided into four stages: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. And first we will study प्रोफेज. सो माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट होते हैं और टू पार्ट्स में इक्वली, क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली इक्वली टू डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. बिल्कुल पेरेंट्स की तरह ही दोनों के अंदर जेनेटिक मटेरियल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. इसको कहते हैं माइटोसिस, और ये सोमेटिक सेल्स में भी होता है, इसलिए इसको सोमेटिक सेल डिवीजन भी बोलते हैं. और क्योंकि दोनों डॉटर सेल के अंदर इक्वल अमाउंट होती है जेनेटिक मटेरियल की, और जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है दैट इज इक्वल इन बोथ द सेल्स, सो इट इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन आल्सो. And first we will study prophase, and mostly prophase is further differentiated into three stages: early prophase, mid prophase, and late prophase. So what happened in early prophase? In early prophase, the chromatin material which is found inside the nucleus, which is found in the thread-like structure, thin thread-like structure, which becomes shortened and thickened and by the process of dehydration and condensation or spiralization of the chromatin fibers. And it will looks like the ball of wool, so this is also called spireme stage. तो अर्ली प्रोफेज में क्रोमेटिन मटेरियल जो कि बहुत थिन था, धीरे धीरे शॉर्ट और थिक होना शुरू हो जाता है डिहाइड्रेशन एंड कंडेंसेशन के
थ्रू स्पायरलाइजेशन, मतलब कॉइलिंग ऑफ द क्रोमेटिन मटेरियल होना शुरू हो जाता है, वो थिक होना शुरू हो जाता है. एंड इन मिडिल प्रोफेज condensation and shortening of the chromosome continue, and they convert into they take proper characteristic shape, and that is called chromosome, which are consisted of two longitudinal strands. They are called sister chromatids, and they are attached to each other by a narrow point. That point is called centromere. And in middle prophase, nucleolus begin to decrease in size, and the pair of centrosomes, it is also called centrioles, appear in the animal cell, but it is absent in the plant cell. तो अर्ली प्रोफेज में थिकनिंग होती है क्रोमोसोम्स की डिहाइड्रेशन और क्वाइलिंग के थ्रू, और वो धीरे धीरे थिक होता शुरू हो जाता है, और बाद में वो शॉर्ट होकर के प्रॉपर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं. क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स के बने हुए होते हैं, और दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो सेंट्रोमियर के थ्रू, एक पॉइंट के थ्रू आपस में अटैच होते हैं, इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं. और स्लोली न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस कैसा होता है ये आपने पढ़ा हुआ है. न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जिसको न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म अंदर फील्ड होता है, और बहुत सारा जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन की फॉर्म में अंदर होता है. तो वो क्रोमेटिन फाइबर धीरे धीरे थिक होकर के क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है, और क्रोमोसोम्स के दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं जो कि आपस में अटैच्ड होते हैं सेंट्रोमियर के थ्रू. और न्यूक्लियोलस भी होता है जो वो धीरे धीरे साइज में डिक्रीज होना शुरू हो जाता है. और एनिमल सेल में एक बात और होती है कि उसमें सेंट्रियोल्स, अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स इज प्रेजेंट एट द 2 points, 2 poles, and these pairs of centrioles are absent in the case of a plant cell. Next is late prophase. In late prophase, nucleolus degenerate completely, and nuclear membrane breaks up into nuclear envelope breaks up into small vesicles, and so that the nuclear sap mixed with the cytoplasm. And kinetochores attract to a type of microtubules called kinetochore fibers, and the kinetochore fibers interact with the spindle polar fibers and connecting the kinetochores to the polar fibers. And spindle fibers are totally appeared, and they are consisted of a special type of protein that is called tubulin. And spindle fibers are achromatic in nature because they are colorless, and they are called spindle because they give the appearance like a spindle. And they have two poles, and spindle fibers are converge towards the poles. And animal cells spindle apparatus is astral because esters or centrioles are present there, and in plant cell it is anastral because esters are absent. And the broadest portion of the spindle apparatus is called equator. तो लेट प्रोफेज में न्यूक्लियोलस डीजनरेट हो जाता है कंप्लीटली, और न्यूक्लियर वॉल जो होती है जिसको कैरियोथीका भी टर्म हम बोलते हैं, वो धीरे धीरे स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉल वेसिकल्स की फॉर्म में टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, और जो न्यूक्लियर सैप अंदर भरा हुआ होता है जिसको कैरियोथीका भी बोलते हैं, वो साइटोप्लाज्म के साथ मिक्स हो जाता है, और स्पिंडल फाइबर्स प्रॉपरली डेवलप हो जाते हैं बहुत अच्छी तरीके से. स्टार्टिंग में स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ डेवलप होते हैं, और बाद में वो प्रॉपरली दोनों पोल्स के ऊपर अरेंज हो जाते हैं, और स्पेशल टाइप के प्रोटीन से ये बने हुए होते हैं, इसको कहते हैं ट्यूब्यूलिन. और जो काइनेटोकोर्स होते हैं वो स्पेशल क्रोमोसोमल फाइबर्स के थ्रू स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाते हैं, और स्पिंडल फाइबर्स एक्रोमेटिक नेचर के होते हैं क्योंकि वो कलरलेस होते हैं, और 2 पोल्स होते हैं, दोनों साइड से कन्वर्ज हो जाते हैं. और एनिमल सेल्स जो होता है स्पिंडल एपरेटस में, एनिमल सेल के अंदर स्पिंडल एपरेटस जो होता है एस्ट्रल होता है, जबकि प्लांट सेल में वो एनास्ट्रल होता है. एस्टर्स आर एब्सेंट इन द केस ऑफ plant cells. और spindle apparatus has the maximum diameter in the center. तो जो broadest portion होता है spindle apparatus का उसको equator बोलते हैं. So this is the picture.
This is early prophase in which the proper nuclear membrane is present, nucleolus is visible, and chromatin fiber is thin. And in this middle prophase, due to the spiralization or dehydration, condensation, they become very thick and convert into chromosome-like structure, and nucleosome become very small, nucleolus become very small, and in the late prophase, the outermost covering is a nuclear envelope, and that break into small vesicles, and the chromosomes are clearly visible in late prophase, and they are consisted of two chromatids which are attached by the centromere at the point, and slowly the nucleolus also degenerate and the spindle fibers are properly visible in late prophase. So condensation and coiling of the chromatin fiber into chromosomes, and in the next step nucleolus begin to decrease in size and chromosomes produced, and in third stage spindle fibers are produced and nucleolus slowly disappear, and this is broken nuclear membrane, this is broken nuclear membrane which will convert into small vesicles. Next stage is metaphase, and in metaphase the chromosomes are shortest and thickest, and they get arranged to the equatorial plane of the spindle fibers, and the largest chromosomes are arranged towards the periphery and the small ones in the center side of the spindle fiber, and this arrangement of the chromosome in the spindle fiber is called equatorial plate or metaphasic plate, and spindle fibers are clearly visible, and different five types of spindle fibers are present. These are continuous, discontinuous, chromosomal, astral and interzonal. So continuous fibers run from one pole to the another pole, and discontinuous fibers radiate from one pole but they do not reach to the another pole, and chromosomal fibers are that attach the centromere to the spindle fibers and spindle poles, and interzonal fibers develop in the anaphase between the two daughter chromosomes, and and the nuclear membrane completely disappear, nuclear sap mixed with the cytoplasm. And the fifth type of fiber is astral fiber, which is found in the animal cell where the centrioles are present, and so astral fibers radiate from the centrioles and give the appearance like the star, and the chromosomes of the cell attach at the equatorial plate due to equal pull of chromosomal fiber. So drawing of the chromosomes on the equator of the spindle is known as congregation, and metaphase is most suitable for the study of chromosome number and their morphology. And after the formation of equatorial plate, a protein complex that is called APC, and APC is anaphase promoting complex become active. So this is metaphase stage in which the spindle fibers are properly visible, and this is the broadest portion of the spindle fiber which is called equator. Excuse me. And this is called equator, on which the chromosomes are arranged, and chromosomes are largest towards the periphery and smallest towards the center, and these are the poles, and at the end of the metaphase APC, that is anaphase promoting complex, become active. So in anaphase फाइव टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, जो 5 तरीके के क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर्स हैं वो प्रॉपर पाए जाते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा थिक और प्रॉपर क्रोमोसोम्स स्मॉल और थिक हो जाते हैं और वो इक्वेटर के ऊपर अरेंज हो जाते हैं, इसको इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं. स्पिंडल फाइबर्स विजिबल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो गई है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, तो जो न्यूक्लियर सैप होता है वो मिक्स हो जाता है साइटोप्लाज्म के साथ, और
ये जो लास्ट में एपीसी जिसको एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं वो प्रॉपर एक्टिव हो जाता है. Next is early anaphase. Anaphase that is further divided into three stages: early anaphase, middle anaphase, and late anaphase. So anaphase, in early anaphase, APC, that is anaphase promoting complex, dissolve the protein cohesin that bind the two chromatids in the region of the centromere, and centromere divides into two so that each chromatid comes to have its own centromere, and now each chromatid is referred as a daughter chromosomes. तो एनाफेज में ये होता है कि जो एपीसी होता है, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, वो क्या करता है, जो सेंट्रोमियर होते हैं दोनों के बीच में एक स्पेशल प्रोटीन होता है, उसको कहते हैं कोहेसिन. कोहेसिन दोनों को चिपका के रखता है आपस में, तो वो डिसॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से दो क्रोमेटिड्स के दोनों जो सेंट्रोमियर्स थे जो आपस में अटैच थे काइनेटोकोर्स, वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं दोनों क्रोमेटिड्स, और दोनों का अपने आप दोनों क्रोमेटिड का सेपरेट सेंट्रोमियर हो जाता है. और इन क्रोमेटिड्स को इस समय हम डॉटर क्रोमोसोम्स बोलते हैं. तो मिड एनाफेज में क्या होता है, ये डॉटर क्रोमोसोम्स जो है अपोजिट पोल्स की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं, और सेंट्रोमियर लीड द पाथ और मूव टुवर्ड्स द पोल्स, एंड दे गिव द अपीयरेंस लाइक वी, एंड इन लेट एनाफेज दे रीच नियर द पोल्स. तो दोनों सेंट्रोमियर जो हैं, दोनों क्रोमेटिड्स के सेपरेट सेंट्रोमियर्स हो जाते हैं, और वो माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं पोल्स की तरफ, और वो जब माइग्रेट करते हैं तो वी अपीयरेंस देते हैं, जिसमें सेंट्रोमियर जो होते हैं वो पोल्स की तरफ होते हैं, और वी की दोनों आर्म्स जो होती हैं, दोनों लिम्स होते हैं, वो इक्वेटर की तरफ, सेंटर की तरफ होते हैं, और स्लोली वो लेट एनाफेज में जाकर के पहुंच जाते हैं कहाँ पर, पोल्स की तरफ. तो ये अर्ली एनाफेज इन विच टू सेंट्रोमियर्स, दोनों क्रोमेटिड्स के अंदर सेपरेट सेंट्रोमियर्स हो जाता है, इनको कहते हैं सिस्टर क्रोमोसोम्स. दोनों जो हैं वो क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं स्लोली. जो बीच में दोनों के बीच में एक कोहेसिन प्रोटीन था वो डिसॉल्व हो जाता है एपीसी कॉम्प्लेक्स के थ्रू. अब ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं और दे मूव्स टुवर्ड्स द पोल. तो दे मूव टुवर्ड्स द पोल थ्रू द स्पिंडल फाइबर, and slowly in late prophase they reach near the poles. So next is telophase stage. Telophase stage, changes that occur in a cell during telophase. First is the daughter chromosomes reach to the opposite poles, and nuclei begin to form at opposite poles, and the nuclear envelope of these nuclei are formed from remnant pieces of the parent cells which were stored inside the vesicles, and nuclei also reappear, and chromatin fibers of chromosomes uncoil, so decondensation takes place. After these changes, telophase is largely complete, and the genetic contents of one cell have been divided into equally into two cells. तो फर्स्ट जो चेंज होता है टेलोफेज में, डॉटर क्रोमोसोम्स जो दोनों थे वो दोनों अपोजिट पोल्स पर पहुंच जाते हैं. न्यूक्लियस जो होता है वो धीरे धीरे दोनों पोल्स पर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है. न्यूक्लियर एनवेलप जो छोटी छोटी वेसिकल्स के फॉर्म में स्टोर हो गया था वो वापस आकर के फिर से दोनों सेल्स के अंदर, पेरेंट सेल में स्टोर था वो वापस आकर के न्यूक्लियर एनवेलप का फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है. दोनों सेल में न्यूक्लियोलस फिर से रीअपियर होता है, और वापस डीकंडेंसेशन जो है, अनकॉइलिंग ऑफ द क्रोमोसोम इनटू क्रोमेटिन, वो स्टार्ट हो जाता है. तो आफ्टर दीज चेंजेस दोनों डॉटर सेल्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. सो नाउ this is the early telophase. Now you can see all the daughter chromosome, they reach to the poles and they collect at the poles. Slowly the nuclear envelope develop and the decondensation of the daughter chromosomes start. तो धीरे धीरे क्रोमेटिन धीरे धीरे क्या होता है, वो वापस थिन करना शुरू कर देता है. क्रोमेटिन फाइबर्स, क्रोमोसोम्स वापस क्रोमेटिन फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. यहाँ एक और न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन होता है.
दूसरा न्यूक्लियो दोनों साइड में दोनों में न्यूक्लियोलस फॉर्म हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म हो जाता है, क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स वापस क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाते हैं और न्यूक्लियर सैप बन जाता है. सो ये चेंजेस जो हैं फिर टीलोफेज में हो जाते हैं. So this is mitosis in plant cell interphase, which is further divided into G1S and G2 phase, and next one is prophase. In prophase, spindle fibers assemble around the nucleus, and in early metaphase they arrange in a spindle shape. All the chromosomes arranged in equator, and now the centromere of the chromosome divide, and two sister chromosomes are produced, and these daughter chromosomes, sister chromosomes moves towards the poles. They reach to the poles, and two cells are produced, two nucleus are produced, and the cell plate is produced in between the two cells. So one cell divided into two cells by the process of mitosis. Next is cytokinesis. Cytokinesis is the division of the cytoplasm. In plant cell, it takes place by the formation of cell plate method, in which the spindle apparatus gets converted into phragomoplast through the modification of its equatorial plane, and small vesicles which were produced by the Golgi apparatus collect at the equator of the phragomoplast. The membrane of the vesicles fuse to form two sheets which encloses matrix, and the matrix become solidified, and the two sheets will convert into, after some time, that will convert into primary wall, and phragomoplast disappear after some time, and the two daughter cells secrete some cellulose, hemicellulose, and pectin for the formation of primary wall, and so by this way two daughter cells having same number and type of chromosomes as were present in the parent cell. So in this picture, the equator of the spindle fibers that will modify into phragomoplast, and in the equator of the phragomoplast vesicles which are released from the Golgi apparatus. They arranged at the equator, and they join with each other and release their material. And the portion, the matrix, it forms two sheets towards both the side, and in between the two sheets, matrix is present. After some time, that matrix solidify, and slowly two cells, both the cells secrete some amount of cellulose, hemicellulose, and pectin for the formation of primary wall. So the two cells get separated, and in both the cells genetic material is equal, and the cytoplasm is also, so nucleocytoplasmic ratio is equal in both the cells. And next is the significance of mitosis. In higher plants, the fertilized egg or zygote mitotically divide and convert into embryo, then sporophytic plant body. And in lower plants, spores are haploid, they germinate and produce gametophytic plant body. So the mitosis plays very important role in the growth and development of the plants, and it maintains the uniformity, and it maintains the nucleocytoplasmic ratio among the cells. And mitosis plays very important role in the sexual reproduction and multiplication of unicellular organisms, and mitosis helps in the repair of damaged organs or tissues also. Sometimes abnormality in mitotic divisions may lead to the formation of new species.
तो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या होता है कि हर प्लांट्स में जो जाइगोट बनता है वो डिप्लॉयड नेचर का होता है, वो माइटोटिकली डिवाइड होता है, आगे जाके एम्ब्रियो बनाता है, और एम्ब्रियो जो है वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही लोअर प्लांट्स में भी माइटोसिस जो है बहुत हेल्पफुल होती है। उसमें क्या होता है, जो जितने स्पोर्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, वो जर्मिनेट होकर के गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनाते हैं। तो माइटोसिस ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करती है। जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है दोनों डॉटर सेल्स में, उसको मेंटेन करती है। तो और मतलब जेनेटिक मटेरियल और साइटोप्लाज्म का अमाउंट जो है वो इक्वल होता है दोनों सेल्स में। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और माइटोसिस जो है जितने भी रिपेयर होते हैं, डैमेज्ड ऑर्गन्स होते हैं, उनको रिपेयर करती है, डैमेज्ड ऑर्गन्स और टिश्यूज को रिपेयरिंग का काम करती है। कभी कभी एबनॉर्मेलिटी भी हो जाती है माइटोटिक डिवीजन्स में, और ये जो एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं इसकी वजह से कभी कभी न्यू स्पीशीज भी फॉर्म होती है। सो ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, हैव अ नाइस डे।